Okay. Hello, dear students and also English learners. Welcome to this class, and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit. And today we are going to learn Unit 64 of Essential Grammar in Use. Okay, in this chapter we are going to learn how to use apostrophe and where to use apostrophe. Apostrophe before yes and after yes. Okay, let's get started today's class. Apostrophe. Apostrophe s like cats. It means here we are using before apostrophe, before yes apostrophe. Okay, like cat's camera, my brother's car, etc. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैट्स, यहाँ पे एस से पहले हम अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं और आगे क्लास में हम एस के बाद में अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। तो हम इनका मतलब देखेंगे कि इनका मतलब होता क्या है और ये आगे और पीछे क्यों क्यों हम यूज करते हैं इनका। ओके, चलिए देखते हैं। लाइक या कैट्स कैमरा, कैट्स कैमरा, कैट का कैमरा। ओके, माई ब्रदर्स कार, मेरे ब्रदर की कार। यहाँ पे हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। इट मीन्स लाइक अपना हक जताते कि ये कोई चीज मेरी है या उनकी है। ओके, लाइक कैट्स कैमरा, माई कैट इज, इट मीन्स माई कैमरा, माई ब्रदर, my brother's car, it means my car. Cat's camera, my brother's car, his, her office, उसका, उनका office. Okay, we normally use apostrophe, this apostrophe yes for the people. We normally use, हम normally people के लिए, noun के लिए हम यूज करते हैं। आई स्टेड एट माई सिस्टर्स हाउस, आई स्टेड एट माई सिस्टर्स हाउस, मैं अपनी सिस्टर के घर रुका। नॉट द हाउस ऑफ माई सिस्टर, तो हियर दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। I stayed at my sister's apostrophe. I stayed at my sister's house, not the house of my sister. Okay. Have you met Mr. Black's wife? It means the wife of Black. तो यहाँ पे हम wife of Mr. Black नहीं यूज करेंगे। Have you met Mr. Black's wife? We can't use, and not wife of Mr. Black. Are you going to James party? क्या आप जेम्स की पार्टी में जा रहे हैं? जेम्स पार्टी, इट मीन्स जेम्स की खुद की पार्टी। Paul is a man's name. पॉल एक आदमी का नाम है, एक पुरुष का नाम है, मेल का नाम है। एंड पॉला इज ए वुमेन्स नेम, और पॉला एक वुमेन्स नेम है, फीमेल नेम है। अब देखते हैं आगे क्लास। ओके, यस, आगे यू कैन यूज apostrophe yes without a noun after it. Okay, Sophie apostrophe Sophie's hair is longer than cat's hair. Cats means cat's hair. Whose umbrella is this? Whose umbrella is this? यह umbrella किसका है, छाता किसका है? My mother's, it means this umbrella is, it means my mother's umbrella. Yes, my mother's umbrella. Where were you last night?
वेयर वर यू लास्ट नाइट? लास्ट नाइट आप कहाँ थे? I was at Paul's. I was at Paul's. It means Paul's house. Paul's house. Friends and friends. Singular and plural. Before apostrophe, after yes. Yes. Apostrophe S. It means singular. And yes, and then apostrophe is plural. Let's see the examples. My house, our house. Plural. My house, singular, and our house is plural. My friend's house, one friend. Apostrophe S, one friend. And my friend's house, friends, yes, and then apostrophe is house and two or more friends. It means two or more friends. His house or her house, it means singular, and their house, it means plural. Friend, student, mother, etc. singular. My mother's car, apostrophe and then yes. Car, my mother's car, it means one mother. My father's car, apostrophe s and car. My father's car, it means one father. And here friends, students, and parents, etc. They're plural. They are singular and they are plural. Plural. My parents' car, it means two parents. Okay, I hope आपको इतना समझ आया होगा. Let's start. अब देखते हैं आगे क्लास. Let's see further. Okay, in this part we will see that how do we use of. We use of for things, places, etc. Like look at the roof of that building. Look at the roof of that building. उस बिल्डिंग की छत की तरफ देखो. Not that building's roof. This is wrong. We didn't see the beginning of the film. We didn't see the beginning of the film. Not film's beginning. What's the name of this village? तो यहाँ पे हम of का यूज कर रहे हैं. What's the name of this village? इस village का क्या नाम है? Do you know the cause of the problem? Of the problem? Of the problem? क्या आप जानते हैं इस समस्या का कारण जानते हैं? You can sit in the back of the car. आप कार के पीछे बैठ सकते हैं. कार में पीछे बैठ सकते हैं. Madrid is the capital of Spain. Madrid स्पेन की कैपिटल है. तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी. एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट for watching this video. Thank you so much for watching this video again, and please don't forget to subscribe our YouTube channel for next videos, for new videos, for new things, new vocabulary and everything. And okay, I hope आपको ये क्लास पसंद आई होगी. Thank you so much and bye bye. See you next time. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.